और आज पुनः हम लोग ऑनलाइन संस्कृत संभाषण कक्षा में देख सकते हैं आप। संस्कृत संभाषणस्य कक्षायां भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम स्वागतम च। तो पुनः बिना विलंब किए हम लोग सर्वप्रथम ध्येय मंत्र का स्मरण करेंगे। आज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ध्येय मंत्र कुछ अलग दिख रहा है। तो एक बार अहम वदामि पुनः भवन्तः अनुवदन्तु। अस्तु, वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानं आहुतं मन्ये, आत्मानं आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। तो आशा है कि आप सभी ने जो पूर्व में पढ़ा है तो उसका आपने अभ्यास भी किया होगा। और आज हम भी प्रतिदिन जब भी कक्षा आरंभ करेंगे तो पूर्वतन अर्थात गत जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है या जो पढ़ लिया है उसका स्मरण करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका स्मरण करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पुल्लिंगः अर्थात पुल्लिंग वयं पठितवन्तः, स्त्रीलिंगः पठितवन्तः, नपुंसकलिंगः पठितवन्तः। तो पुल्लिंगे वयं किं पठितवन्तः? सः एषः कः। सः एषः कः अर्थात वयं वाक्यानि अपि प्रयोगं यः कृतवन्तः अद्यापि कुर्मः। यथा सः बालकः, सः बालकः, कः बालकः? सः बालकः। पुनः एषः, एषः अर्थात समीपस्थ। यथा एषः दूरभाषः, एषः दूरभाषः, कः दूरभाषः? एषः दूरभाषः। इदानीं पश्यन्तु कः, तो कः जानन्ति एव। सः कः, एषः कः, कः अर्थात प्रश्नवाचकः। अस्माकं कौन, वह कौन, यह कौन इति। पुनः पश्यन्तु स्त्रीलिंग सा, सा एषा, हाँ, सा बालिका, सा बालिका, का बालिका? सा बालिका इति। एषा, इदानीम् एषा दूरवाणी, का दूरवाणी? एषा दूरवाणी। सम्यक् स्पष्टता अस्ति? सर्वे अवगतवन्तः सम्यक्? इदानीम् एषा दूरवाणी प्रश्नवाचकः। हाँ, का दूरवाणी? एषा दूरवाणी। सम्यक्, एषा का इति। यह कौन? अर्थम समानमेव। यह जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में अर्थ को जाना वही अर्थ यहाँ भी होगा। सभी को स्पष्ट है? फिर आप देखिए नपुंसक लिंगः अर्थात तत् एतत् किम। तो तत् अर्थात तत् चित्रम अथवा तत् दूरदर्शनम अथवा तत् व्यजनम एवं पुनः तत् एतत्। तो एतत् स्वेदकम, पश्यन्तु स्वेदकम, एतत् स्वेदकम, एतत् युतकम, युतकम, हाँ, एतत् युतकम। सम्यक्। पुनः एतत् युतकम, एतत् नेत्रम, नेत्रम, एतत् नेत्रम। सम्यक्। इदानीम उदरम, एतत् उदरम। हमने कल बताया था आपको कि उदरम अर्थात पेट। सम्यक्। एतत् उदरम। किम किम अस्ति? किम प्रश्नवाचकः अस्ति। कस्य प्रश्नवाचकः? नपुंसक लिंगस्य प्रश्नवाचकः। सम्यक्। एतत् किम, किम एतत् इत्यादि इत्यादि। पुनः वयम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति अहं, भवान्, भवती। तो सर्वप्रथम वयं पुल्लिंगे पठामः। तो पश्यन्तु अत्र अहम, अहम, भवान् कः। तो इदानीम् उपस्थापनं यदि करोमि चेत् अहं वदामि अहम, अहम चिकित्सकः,
अहम चिकित्सकः, अहम छात्रः, अहम छात्रः, भवान कः? हाँ, अहम अध्यापकः। हाँ, सम्यक्। अहम गायकः, अहम गायकः, भवान कः? हाँ, अहम अभियांत्रिकः। सम्यक्। इंजीनियर को हम क्या कहते हैं? अभियांत्रिकः। अथवा अहम संगणक चालकः। सम्यक्। संगणक चालकः अर्थात कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति। संगणक चालकः अर्थवा स्त्रीलिंगी अस्ति चेत संगणक चालिका। हाँ, और वही ये जितने भी शब्द हैं आपकी स्क्रीन में, जितने भी चित्र देख रहे हैं, भवन्ता यद यानी चित्राणि पश्यन्ति यत्र, चिकित्सकः तो स्त्रीलिंगे वदामः चेत् चिकित्सिका, अध्यापकः अध्यापिका, एवं पुनः अधिवक्ता तो अधिवक्त्री, एवं पुनः पश्यन्तु बालकः बालिका, आरक्षकः आरक्षिका, एवं एवं वयं परिवर्तयामः। पुनः अग्रे अस्ति स्त्रीलिंगमपि अस्ति, वयं पश्यामः। तो अहम अध्यापकः, अहम अधिवक्ता, अहम बालकः। सम्यक्। अहम बालकः, अहम आरक्षकः, आरक्षकः अर्थात पुलिस। सम्यक्। पुनः पश्यन्तु गायकः, अहम गायकः। सम्यक्। अहम गायकः, अहम अभियांत्रिकः। स्पष्टम्। अहम अभियांत्रिकः। अहम कः इत्युक्ते स्वपरिचयं दातव्यं। स्वपरिचयम् इत्युक्ते भवान किं करोति, आप हैं क्या, क्या हैं आप, ये जो है हम लोगों को परिचय देना है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छात्र हैं, गृहिणी हैं, अथवा प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, यत् किमपि अस्ति, नेता हैं, सब कुछ आप, तो वो कैसे परिचय देंगे? अहम, अहम नेता। इदानीं पश्यन्तु नर्तकः, अहम नर्तकः, अहम कृषकः। सम्यक्। अहम कृषकः, अहम संगणक चालकः, अहम संगणक चालकः। सम्यक्। अहम संगणक चालकः, भवान कः? हाँ, अहम आरक्षकः। हाँ, भवान कः? अनुजः, अहम अनुजः। इदानीं भवन्तः एतत् तु वक्तुं शक्नुवन्ति, स्वनाम अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। कथं? तो अहम अनुजः, अनुजः छोटा तो बोलेंगे ही, किंतु नाम भी। अहम हिमांशु, भवान कः? अहम अमितः, अहम लेखकः, अहम सुधाकरः, अहम चिरंजीवः, अहम हिमांशुः, एवं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। अहम अपना एक परिचय देंगे कि आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, अर्थात आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या कृषि क्षेत्र में हैं, किसान हैं, है ना। और फिर इसके बाद उत्तर क्या देंगे? अहम। कोई प्रश्न आपसे किया पुल्लिंग में, तो ये, हाँ, ये हम लोग पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। पुल्लिंगे एव प्रयोगः एतद् भविष्यति। सम्यक्। तो इदानीं पुनः वदामि, प्रश्नं करोमि। अहम अध्यापकः, भवान कः? भवान कः? भवान कः? भवान कः? हाँ, भवान कः? हाँ, भवान कहा। आप भी बोलते जाइए सभी लोग। ठीक है। तो अभी ये हम लोग पुल्लिंग में देखा, और हम इसके बाद फिर हम अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो भवन्तः सर्वेपि वदन्तु यथा अत्र अस्ति अहम, अहम युवकः, अहम रुग्णः। अस्तु। अहम, तो आप सभी क्या बोलेंगे? भवान युवकः, भवान रुग्णः, भवान भारतीयः, ऐसे सभी लोग बोलेंगे। ठीक है। तो मैं नाम लेता जाऊंगा, अभ्यास करेंगे हम लोग यहाँ, और आप सभी लोग भवान करके बोलते जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं लूंगा, तो अहम, अहम रुग्णः, अहम भारतीयः, अहम नागरिकः, एवं। तो सर्वप्रथम अहम का हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो वदन्तु युवकः, हाँ, उच्चैः किंचित, रुग्णः, हाँ, भारतीयः, नागरिकः, उत्तमः, मूर्खः, अहम मूर्खः, भक्तः, हाँ, चंचलः, प्रसन्नः, शान्तः, स्थूलः, उन्नतः, नम्रः, सेवकः, वृद्धः, प्रसन्नः, तरुणः,
गायकः अहं गायकः शान्तः अहं शान्तः नायकः अहं नायकः श्रोता अहं श्रोता अधिकारी अहं अधिकारी अधिवक्ता अहं अधिवक्ता नेता अहं नेता अभिनेता अहं अभिनेता सज्जनः अहं सज्जनः चतुरः अहं चतुरः वाचालः अहं वाचालः चिकित्सकः अहं चिकित्सकः अध्यापकः अहम् अध्यापकः नायकः अहं नायकः सम्यक् स्पष्टम् इदानीं भवान् प्रयोगं कृत्वा इत्युक्ते भवान् नायकः भवान् गायकः एवं वदामः अस्तु तो वदन्तु भवान् युवकः रुग्णः भवान् रुग्णः भारतीयः भवान् भारतीयः नागरिकः भवान् नागरिकः उत्तमः भवान् उत्तमः हाँ इदानीम् अग्रे अस्ति मूर्खः भवान् मूर्खः भक्तः भवान् भक्तः हाँ, चञ्चलः भवान् चञ्चलः प्रसन्नः भवान् प्रसन्नः शान्तः भवान् शान्तः स्थूलः भवान् स्थूलः उन्नतः भवान् उन्नतः नम्रः भवान् नम्रः सेवकः भवान् सेवकः वृद्धः भवान् वृद्धः तरुणः भवान् तरुणः गायकः भवान् गायकः नायकः भवान् नायकः श्रोता भवान् श्रोता अधिकारी भवान् अधिकारी अधिवक्ता भवान् अधिवक्ता नेता भवान् नेता अभिनेता भवान् अभिनेता सज्जन भवान् सज्जनः सज्जनः सम्यक् हाँ चतुरः भवान् चतुरः वाचालः भवान् वाचालः अध्यापकः भवान् अध्यापकः लेखकः भवान् लेखकः अर्चकः भवान् अर्चकः पाचकः भवान् पाचकः गायकः भवान् गायकः अध्यापकः भवान् अध्यापकः ठीक है तो ये हमने पुल्लिंग में देखा अभी जी अर्चकः अर्थात पुजारी पूजा करने वाला व्यक्ति अर्चकः ठीक है अभी हम आगे देखेंगे यहाँ देखिए अभी हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे ठीक है अभी हम लोगों ने पुल्लिंग में अभ्यास किया इदानीं किं कुर्मः स्त्रीलिंगे वयं पठामः तो पश्यन्तु अहं भवती का तत्र पुल्लिंगे किम् आसीत् भवान् कः पुल्लिंगे आसीत् भवान् कः स्त्रीलिंगे किम् अस्ति भवती का सम्यक् भवती का तो पश्यन्तु यथा उत्तरं तु तथैव अस्ति यथा वयं पुल्लिंगे दत्तवन्तः अहं छात्रः तु अहं छात्रा इदानीं पश्यन्तु अहम् अध्यापिका अहम् आरक्षिका अहम् अधिवक्त्री अधिवक्त्री स्त्रीलिंगे किं भवति अधिवक्त्री भवति सम्यक् स्त्रीलिंगे किं भवति अधिवक्त्री अग्रे अस्ति अहं शिक्षिका अहं शिक्षिका अहं का अहम शिक्षिका और पुनः अग्रे पश्यन्तु गृहिणी देख लीजिए गृहिणी की क्या अवतार हैं एकस्मिन् कर्तरी अस्ति एकस्मिन् शोधनी अस्ति पुनः ओदनदर्वी अस्ति फेनकम् अस्ति एवं सर्वविध सामग्री तस्याः हस्ते अस्ति महिलायाः तो एषा का गृहिणी तो अहम गृहिणी सम्यक् अहम गृहिणी पुनः अहम चिकित्सिका पुनः पश्यन्तु अहम गायिका भवती का हाँ अहम गायिका भवती का अहम अध्यापिका सम्यक तो हम सबसे पहले अपना नाम बोले जो कुछ हैं हम उसका परिचय देते हुए हम दूसरे से प्रश्न करेंगे भवती का इति सम्यक स्पष्टम इदानीं पश्यन्तु अभियांत्रिकी अभियांत्रिकः पुल्लिंगे भवति और अभियांत्रिकी स्त्रीलिंगे भवति सम्यक् इदानीं पश्यन्तु नर्तकी नर्तकः नर्तकी अहं नर्तकी इदानीम् अग्रे किमस्ति अहं छात्रा अहं संगणकचालिका संगणकचालकः संगणकचालिका एवं तो इदानीं भवन्तः वदन्तु वाक्यानि इत्युक्ते अहं पृच्छामि भवती का लेखिका अहं लेखिका हरि ओं
भवती वदतु भवतीका अहं संगणिका हाँ संगणक चालिका हाँ भवान यदि संगणिका भविष्यति चेत भवती तो कंप्यूटर अभवत हाँ, आप तो कंप्यूटर हो गए तो अहम संगणक चालिका सम्यक भगिनी पश्यतु भगिनी अस्ति भगिनी संगणक चालिका हाँ भगिनी तत्र अस्ति तो भगिनी संगणक चालिका एवं सम्यक तो अहम अध्यापकः भवती का हाँ अहम छात्रः भवती का अहम छात्रा। ठीक है आप सभी ज्ञात आप सभी को हो गया होगा कि मैं किससे कहाँ से पूछ रहा हूँ अर्थात मैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में पूछ रहा हूँ। सर्वप्रथम पुल्लिंगे वदामि अहम अभियांत्रिकः भवती का अहम अभियांत्रिकी सम्यक भवती अर्थात स्त्रीलिंगे अहम अभियांत्रिकी। इदानीं पश्यन्तु अग्रे अस्माकम् अभ्यासः अस्ति सम्यक पश्यन्तु अत्र हाँ इदानीं वयं तथैव वदामः यथा पुल्लिंगे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। तो अत्र अस्ति युवती तो अहं युवती भवन्तः सर्वे अहम् इति प्रयोगं कृत्वा वाक्यस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु युवती रुग्णा अहं रुग्णा भारतीया अहं भारतीया नागरिका अहं नागरिका उत्तमा अहं उत्तमा मूर्खा अहं मूर्खा भक्ता अहं भक्ता चंचला अहं चञ्चला प्रसन्ना अहं प्रसन्ना शांता अहं शान्ता स्थूला अहं स्थूला नम्रा अहं नम्रा उन्नता अहं उन्नता सेविका अहं सेविका वृद्धा अहं वृद्धा तरुणी अहं तरुणी गायिका अहं गायिका नायिका अहं नायिका श्रोत्री अहं श्रोत्री ठीक है श्रोत्री एवं अस्ति श्रोत्री अधिकारिणी अहं अधिकारी अधिवक्त्री अहं अधिवक्त्री हाँ नेत्री अहं नेत्री नेता नेता इति नेत्री स्त्रीलिंगे नेत्री। पुनः पश्यन्तु अभिनेत्री अहं अभिनेत्री सज्जना अहं सज्जना चतुरा अहं चतुरा वाचाला अहं वाचाला प्रबंधिका अहं प्रबन्धिका वैद्या अहं वैद्या सम्यक एवमेव वयं भवती इति भवती वैद्या भवती गायिका भवती लेखिका सम्यक। इदानीं वदामः युवती किं हाँ भवती युवती। इदानीं भवती रुग्णा उच्चैः अनुजः उच्चैः वदतु भवती भारतीया भवती भारतीया नागरिका भवती नागरिका उत्तमा उत्तमा हाँ उत्तमा भवती उत्तमा सम्यक् भवती उत्तमा। इदानीम् अग्रे मूर्खा भवती मूर्खा भक्ता भवती भक्ता चंचला भवती चञ्चला वृद्धा भवती वृद्धा तरुणी भवती तरुणी गायिका भवती गायिका नायिका भवती नायिका श्रोत्री भवती श्रोत्री अधिकारिणी भवती अधिकारिणी अधिवक्त्री भवती अधिवक्त्री नेत्री भवती नेत्री अभिनेत्री भवती अभिनेत्री सज्जना भवती सज्जना चतुरा भवती चतुरा वाचाला भवती वाचाला प्रबंधिका प्रबन्धिका वैद्या वैद्या सम्यक्। इदानीम् अहं यदि परस्परं कारयामि परिचयं तो इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति यथा अनुजः आगच्छति और भवती अत्र आगत्य स्वपरस्परं वदामः किं यथा अहम् अध्यापकः भवती का पुनः भवती उक्तवती अहं छात्रा भवान् कः। तो इस प्रकार आपको बोलना अस्ति ठीक है। तो वक्तुं शक्नोति अत्र आगच्छन्तु हाँ किञ्चित् भवन्तः पश्यन्तु वयं कथं कुर्मः एकः पश्यन्तु हाँ इदानीं अहम् अध्यापकः भवती का अहं शकुन्तला भवान् कः अहम् अध्यापकः हाँ सम्यक् एकम् इतोपि एकवारम् इतोपि
अहम गायकः भवती का अहम गायिका भवान् कः अहमपि गायकः उत्तमं गायिका गायकः सम्यक् धन्यवादः सम्यक् भवन्तः ज्ञातवन्तः तो एतादृशी वयं परस्पर अभ्यासः अस्माकं करणीयः अस्ति ठीक है हम लोग इस प्रकार अभ्यास करेंगे सम्यक् स्पष्टता अस्ति सर्वे अवगतवन्तः कथम अहम भवान भवति पुनः एक बार अहम वदामि अहम भवान भवति एवं भवान भवति अहम कः भवान कः अहम का भवती का तो अहम अध्यापकः भवान गायकः अहम अध्यापिका भवान गायिका एवं सम्यक तो आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आज इतना ही सर्वेभ्यः धन्यवादः पुनर्मिलामः सर्वेषां कृते नमः संस्कृताय।